Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena. धन्यवाद राजेश। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और हम आप सभी श्रोताओं का आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में स्वागत करते हैं। आज के इस अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और साथ ही चर्चा भी करेंगे। आज चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। Domestic benchmark indices, Nifty and Sensex declines for the sixth consecutive session. Sensex sheds 110 points while the Nifty settles below 23,550 points. India's exports register a growth of over 7% during the April-October 2024. WPI inflation rises to 2.36% in October and Union Minister Piyush Goyal launches International Trade Fair 2024 at New Delhi today. घरेलू बेंचमार्क सूचकांक आज लगातार छठे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 110 अंक गिरा और निफ्टी 23,550 के स्तर के नीचे रहा। अप्रैल से अक्टूबर 2024 के दौरान भारत के निर्यात में 7% से अधिक की बढ़त। अक्टूबर में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़ों में 2.36% की वृद्धि देखी गई और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का शुभारंभ किया। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बाजार के ऊपर। घरेलू बेंचमार्क सूचकांक आज लगातार छठे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। आज के सत्र में शुरुआती बढ़त देखने को मिली, लेकिन कमजोर वैश्विक संकेतों, बढ़ते डॉलर सूचकांक और विदेशी निवेशकों द्वारा निरंतर बिकवाली के चलते बाजार में कमजोरी देखने को मिली। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 110 अंक यानी 0.14% के नुकसान के साथ 77,580 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.11% की मामूली गिरावट के साथ 23,535 पर रहा। बात करें बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो दोनों ही सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई। मिड कैप में 0.41% की तेजी देखी गई और स्मॉल कैप 0.83% के फायदे में रहा। सेंसेक्स की 30 में से 20 कंपनियां आज घाटे में रहीं। Domestic benchmark indices, Nifty and Sensex, ended lower for the sixth consecutive session today. Despite a positive start, Indian markets were unable to hold their early gains due to pressure from weak global trends, a rising dollar index, and continued foreign investor selling. At close, the Sensex was down 110 points or 0.14% at 77,580 and the Nifty was down 26 points or 0.11% at 23,532 a short while ago. However, the broader market at the BSE traded higher with the small cap index rising by 0.83% and the mid cap index gaining 0.41%. In the Sensex index, 20 out of 30 companies logged losses. The top laggards were Hindustan Unilever lost over 3%, Nestle India shed 2.3% and NTPC lost 2.19%. Conversely, among top gainers, Reliance increased 1.23%, Kotak Bank rose 1.18% and Tech Mahindra gained 0.78%. In sectoral indices of the BSE, 9 out of 20 sectors ended the trade in negative territory. In the top laggards were FMCG
which declined 1.35%. Utilities dropped 0.88%, and oil and gas shed over 0.45%. Meanwhile, among the top gainers, realty sector increased over 1%, consumer added 0.81%, and telecommunications gained 0.64%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,145 companies advanced and 1,813 declined, while 92 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 31 companies hit their 52-week high, while 148 hit their 52-week low. विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 84 रुपये 39 पैसे के स्तर पर दर्ज किया गया। डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान 106.93 के स्तर पर था। भट्टाचार्य जी, आज के बाजार को देख करके आप क्या कहेंगे? लगातार छठे दिन गिरावट का सिलसिला जारी है और किस तरफ ये इशारा कर रहा है? देखिए, जो आपने सही कहा कि ये छठे दिन लगातार गिरावट देखी हमने मार्केट में। उसके कारण भी आपने बताए जी। उसके जो वैश्विक बाजार में जो एक नरमी दिख रही है जी। उसको आपने देखा। डॉलर इंडेक्स की जो राइज जो इंक्रीज हमने देखी उसका भी कारण है एक है। और जो विदेशी जो निवेशक जो हैं मार्केट में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो भी अपना पैसा लगातार हमारी मार्केट से बाहर ले जा रहे हैं। पर ये जो हमने जो मार्केट की जो गतिविधि देखी, इसको हमें ये भी नज़र में डालना होगा कि अगर जो सेक्टोरल इंडिसेस में अगर देखें तो जो ट्रेंड जो लगता है वो मिक्स ट्रेंड लग रहा है। जैसे कि स्मॉल कैप इंडेक्स है, वो आज बढ़ोतरी दिखी हमें, मिड कैप इंडेक्स में बढ़ोतरी दिखी, ऑटो इंडेक्स में बढ़ोतरी दिखी, और जो आपकी जो बैंकिंग इंडेक्स में भी हमने बढ़ोतरी देखी है जी। तो जो घटा मार्केट में जो सेटबैक आया है वो मेनली आपका सेटबैक आया है जो एफएमसीजी जो सेक्टर जो है जी, जो कंजम्पशन सेक्टर के जो वो हैं उसमें जरा कमजोरी दिखी जी, जी। तो मुझे लग रहा है जो इस वक्त जो हम स्टॉक मार्केट जो बृहत्तर जो एक इकोनॉमी जो है, जिसे हम कहेंगे जो मैक्रो इकोनॉमी है, उसके जो वीकनेस को वही दर्शा रहा है कि जो कंजम्पशन वीकनेस जो है वही मार्केट में दिख रहा है हमें। क्योंकि कंजम्पशन या डिमांड की जो एक नरमी जो है वही मार्केट में प्रतिफलित होकर हम देख रहे हैं कि जो एफएमसीजी इंडेक्स है वो काफ़ी घाटे में गया। पर अगर आप देखें टेलीकॉम इंडेक्स या अगर आप ऑटो इंडेक्स या बैंकिंग इंडेक्स, बल्कि इवन जो स्मॉल इंडेक्स एंड मीडियम इंडेक्स, उसमें मीडियम जो मिड कैप इंडेक्स, उसमें भी हमने इंक्रीज देखी है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को पैसे ले जाने से ज़रूर मार्केट में थोड़ी बहुत कमी आ रही है। और आज तक की अगर देखें तो करीबन 10% डिक्लाइन हो चुकी है पीक से जी। तो जो खुदरा जो निवेशक जो है उसको सोच समझ के आगे की ओर देखना है, क्योंकि जो कंजम्पशन बास्केट जो है वो वीक लग रहा है। पर इन्वेस्टमेंट जो है, जो पहली तिमाही में जो इन्वेस्टमेंट जिसमें नरमी आई थी, कमी आई थी, वो दूसरी तिमाही में हमने ज़्यादा इंक्रीज देखा, करीबन 15% की वृद्धि हुई। और इसी कारण मैं समझता हूं कि स्टॉक मार्केट को आपको सोच समझ के अगले महीने तक, कुछ महीने तक देख के इन्वेस्ट करना है, क्योंकि कंजम्पशन स्टोरी में थोड़ी बहुत आंच पहुंची है, पर इन्वेस्टमेंट स्टोरी में अभी भी पूरी तरह को जो धक्का जो हमने कंजम्पशन में देखा है वो नहीं आया है। और स्टॉक मार्केट वही दिखा रहा है कि कंजम्पशन स्टॉक्स जो हैं वो जरा नीचे जा रहे हैं, पर जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स जो हैं, जहाँ पे जिस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और फाइनेंशियल सेक्टर में जैसे उसमें और अर्निंग्स की ओर देखेंगे तो अर्निंग्स में भी यही दिखता है आपको कि जो फाइनेंशियल सेक्टर, जो बीएफएसआई सेगमेंट में जो अर्निंग जो है काफ़ी अच्छी गई है। पर जो नॉन बीएफएसआई सेगमेंट जो है, पर्टिकुलरली जो रिटेल या जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर जो है, हिंदुस्तान लीवर हुआ ऐसे कंपनियों को, उसके स्टॉक प्राइसेस में नरमी दिख रही है। और हमें
अगले हफ्तों में इन्वेस्ट करने के लिए हमें यही चीज को ध्यान में रखना चाहिए, और यही मैं समझता हूँ कि चेतावनी नहीं है पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है. So, AKB, India's consumer price inflation, the story which we will be taking up shortly, has surged to a 14-month high in October, reaching roughly about 6.20%, up from 5.49% in September, driven largely, as we were discussing, by escalating food prices. Now, my vegetable prices. Okay. All right. This spike has effectively reduced the likelihood, reduced the likelihood of a rate cut by the Reserve Bank of India in its upcoming December policy. Why I'm saying that is because it breaches the upper limit of the central bank's target range. You are absolutely right. It does raise some questions about whether the earlier expectation of the rate cut trajectory that earlier people had projected will be followed or not. It may be deferred. But please remember that the RBI's Monetary Policy Committee decides on its policy rate trajectory not just on the basis of inflation but also on the necessary growth impulses that it can create. What we do see, along with a rise in the consumer inflation rate, retail inflation rate, we also see early signs of a growth questions, in a sense that earnings growth is slightly down, consumption is not picking up, the second quarter growth, whose numbers will be available to us at the end of this month on November 30th, and remember that the next policy meeting will be in the first week of December. So I have a feeling is that yes, going by the inflation numbers, going by the fact that they are above 6%, the Monetary Policy Committee will take a very close look at the game plan it has for a rate cut. But at the same time, they will be adequately informed by the GDP numbers that come out for the second quarter on November 30. Because if, as is being feared, that the GDP growth for the second quarter will be on the lower side compared to what we saw in the previous three quarters, then I have a feeling that that timetable of a rate cut may be reviewed by the Monetary Policy Committee in its December review itself. I am not saying that they will be cut in the rate cut on December, but certainly the timetable that the RBI Monetary Policy Committee had indicated in the past reviews, that may undergo some sort of modification or review. So what you said means that there is nothing that is giving the impetus to the market to accelerate in any way. There are no positive sentiments coming our way. In fact, the Trump anticipation trade that people are talking about, till February, we will remain like this, because once he assumes office, then things might become clearer to the market. In the airplane parlance, I would say that this is the time to pay heed to the usual air hostesses warning or a signal. Seat belt, bana ke rakhiye. Please wear your seat belts even when there is a clear sign. So one has to be cautious. No, when you say that, what do you mean? How does this translate for the investor? What should the investor be doing in that? The investors should keep a close watch on the future trajectory of the markets thing. Right now, as we just now said, that the fall in the market valuation has come down by around 10% from its peak. One has to see that if this trajectory is maintained in the same direction, that is falling further. Now, if that happens, then should I worry? Yes, I think you should worry. But remember, from today's stock market development, the pace of foreign portfolio investment pulling out money has slowed. The manner in which the stock market fell today was pretty mixed. It began very, very robustly.
It is only in the latter half of the trading session that when foreign portfolio investors pulled out some money, the dollar index strengthened, that the stock market showed some signs of fall, and that too not in every category, not in every sector. You still have the small cap index, the mid cap index, the bank index, the auto index. All these indices showed some gains. Even though if you take a weekly cycle, those gains may have been neutralized, but today's market was actually a very mixed market. You should not go just by the headline number. Okay, but before Sparsh asks you a question, I quickly want to know about the continued FII selling and China's stimulus. What is the correlation and what is the effect, combined effect of these two? The way I would like to see it is that the Chinese stimulus is largely for the domestic market. It is to shore up the subnational governments in the Chinese economy, clean up their financial mess, and it is not something to do with revived demand in that economy, whose impact will be felt across the globe. So it is a domestic initiative to clean up the financial system. What I do see is this, that if the Chinese economy is further buffeted, given the fact that its own finances are not in good shape, given the fact that the Trump administration will be unusually harsh on the Chinese trade exports initiative. Now these might actually be seen as some sort of an opportunity for the Indian economy, in a sense that if the Trump administration increases the tariffs on Chinese imports, then probably it gives some opportunity for the Indians to play and use that market that will be vacated by the obstructions that will be created for the Chinese exports. We have, Sparsh, we do have India's export performance during April-October 2024, which has shown a strong growth with an overall increase of 7.28%, totaling $468.27 billion. What do you have to say? That seems like a very good news. It is recovered from what it was a few months ago. But remember, this is a cumulative growth figure, which means that the performance in the last month most probably must have been good to present a positive growth in exports. But I think 6 to 7% growth. Overall increase is 7.28%. Yeah, 7.28% is still not what we should actually feel very thrilled about. It is the least minimum that we need. We need to grow our exports in double digits, which is what was happening some time back. So therefore, we need to seek sort of solace and feel comfortable that exports are at last picking up at a good pace. But this momentum has to be maintained. Okay, according to the data released by the Ministry of Commerce and Industry today, merchandise exports alone reached $252.28 billion, marking a steady growth of 3.18% compared to $244.51 billion in the same period. On the service exports front, the estimated value of service exports during April to October 2024 stands at $215.98 बिलियन। जी आइए नजर डालते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर। 5 प्रमुख सूचकांकों में से 3 आज गिरावट के साथ बंद हुए। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट 1.76% के नुकसान में रहा। जापान का निकेई 0.48% गिरा और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.24% की कमजोरी देखी गई। वहीं सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.48% की बढ़ोतरी देखी गई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर यूरोपीय शेयर बाजारों में आज सकारात्मक रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 1% से अधिक के फायदे में रहा। फ्रांस का कैक 0.9% मजबूत रहा और लंदन का फुत्सी 0.24% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था।
The major U.S. stocks ended narrowly mixed yesterday. While the tech-heavy Nasdaq dipped 0.3%, the S&P fell marginally and the Dow inched up 0.1%. India's wholesale price index, WPI-based inflation for the month of October, escalated to 2.36% on an annual basis, showed the data released by the Ministry of Commerce and Industry today. In September, WPI inflation was at 1.84% and August inflation was at 1.25%. The rise in inflation for October is mainly due to higher prices in food articles, food product manufacturing, other manufacturing sectors and the production of motor vehicles, the report noted. Inflation in wholesale food prices increased to 13.54% during the month compared to 11.53% in September. The spike in food articles was led by sharp increases in the prices of vegetables. The wholesale price inflation spike follows the increase in consumer price index CPI inflation for October as well. This means inflation that inflation is high, so therefore the rates are not going to come down. Well, not, as I said, that unless there are the GDP numbers in November 30 show extreme softness, Okay. and if they do show, then nothing in December, but maybe the timetable that the Monetary Policy Committee members had created or envisaged for the next year will probably undergo some change. But remember that wholesale price index is actually broadly a producer price index. The prices, if they rise, they don't impact you and me, but they impact the producers. Now, if the producers actually, then therefore, their margins are impacted. So it does impact the stock market that we discussed just now, but indirectly, in a sense that the producers' margins are impacted, which is why you will see that the vegetable prices have gone up hugely. 13% is the wholesale food prices, and now if that is the increase, then the entire segments of industry which are relying on food items as their raw material, and their margins are squeezed, so therefore the stock market is reflecting some sort of a decline in the FMCG's index. So I think we had to understand the impact of WPI, not in terms necessarily on what it does to the RBI's rate cut plan, but also to what it does to the producers of items who use them for their final products or services. एक भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि WPI और CPI को लेमैन की लैंग्वेज में अगर हमारे हिंदी के श्रोताओं के लिए आप बताएं क्या फ़र्क है दोनों चीज़ों। देखिए जो एक ये तो है थोक मूल्य है। जो थोक मूल्य का मतलब ये है कि जो बाजार में जो एक निर्माता जो है, वस्तुओं के निर्माता या जो सेवाओं के जो प्रदान करने वाले जो इकाइयां हैं, जो जब मार्केट में जाती हैं, वो जो मंडी के भाव जो हैं, वो मंडी के भाव ये होते हैं। तो ये मंडी के भाव जो कंज्यूमर प्राइस जो है वो खुदरा मूल्य है, खुदरा मुद्रास्फीति है जिसे कहेंगे हम। वो जो है वो हम आप जब मार्केट में जाते हैं, सब्जी के मार्केट में जाते हैं, पर वही जो सब्जी वाला जो है, जो जिस दाम से वो खरीदता है मंडी से, वो होता है होलसेल प्राइस, वो होता है थोक मूल्य, और जो हम जो खरीदते हैं सब्जी वाले से, वो होता है खुदरा मूल्य। तो इसीलिए खुदरा मूल्य का जो प्रभाव जो होता है वो ज़्यादातर जो उपभोक्ता है डायरेक्टली में होता है, और जो थोक मूल्य का जो प्रभाव जो होता है ज़्यादातर निर्माताओं के ऊपर पड़ता है, क्योंकि उनकी मार्जिन में बहुत स्क्वीज होता है। अगर मार्जिन वो स्क्वीज नहीं करते हैं तो वो दाम का जो वो ऑन पास कर देते हैं, और खुदरा मूल्यों में भी उसी का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसीलिए इन्फ्लेशनरी स्पाइरल जिसे हम कहते हैं, उसे हमें होलसेल और रिटेल दोनों के कंट्रोल काबू पाना है। अगर नहीं पाएंगे तो इन्फ्लेशन जो एक जैसे हम बीस्ट कहते हैं उसको, वो बीस्ट अर्थनीति के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल। और अब रुख करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
इस वर्ष मेले का विषय है विकसित भारत एट 2047। इस वर्ष झारखंड राज्य पर विशेष ध्यान रहेगा, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य होंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न देश भी हिस्सा लेंगे। इस वर्ष 11 देश अंतर्राष्ट्रीय मेले में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें चीन, मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। मेले का उद्घाटन करते हुए श्री गोयल ने कहा कि सरकार भारत व्यापार प्रोत्साहन संगठन का विस्तार करने और इसे अखिल भारतीय संगठन बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने विश्व के अन्य भागों में भारत का अपना मेला आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करने की आवश्यकता जताई। इस मेले में कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान मंत्रालय के पवेलियन का उद्घाटन किया। मीडिया से बात करते हुए श्री रेड्डी ने मिनरल्स से माइलस्टोन नामक प्रदर्शनी के महत्व पर प्रकाश डाला। Oil prices slipped in early trade today, reversing most of the previous session's gains due to a stronger dollar and concerns over higher global output amid slow demand growth forecasts. However, crude prices recovered later in the day. Brent crude futures gained 0.48% to trade at $72.63 a barrel, and West Texas Intermediate was up by 0.5% to trade at $68.77 when reports last came in. How happy or disappointed? I am not disappointed, neither disappointed nor happy. As the onset of winter, this is the time when crude oil prices internationally firm up a bit. This is because the consumption demand for crude oil go up. But please remember that this could have been far worse because of the Ukraine-Russia conflict is still going on. Israel-Gaza conflict is still going on. Geopolitical tensions are on. But in spite of that, the manner in which the oil supplies have been by and large been maintained and stabilized, the price of maintaining this range is actually a kind of good news for economies that are huge consumers like India, importers. 89% of our total import needs are met through imports. So this is good news, and if it is maintains this level, I would say the current year India will be able to manage to hold its overall external account in good shape. जी, अब नजर डालते हैं सोने और चांदी की ओर। सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 1.08% गिरकर 73,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 1.92% गिरकर 87,860 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। एक भी आपका शॉर्ट कमेंट, क्योंकि अभी त्योहार का सीजन निकला है, लेकिन गोल्ड पे हमारे पास वैसे भी कई सारे कॉल्स आते रहे, तो निवेश का तरीका क्या होना चाहिए कि फिजिकल गोल्ड लें या ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करें, या क्या आपकी राय? देखिए, जो गोल्ड जो है वो अगर ईटीएफ का अगर अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अगर आप टेक्नोलॉजिकली अगर अपने आप को मानते हैं कि आप टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि ईटीएफ बेहतर है जी। जब स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं करता, गोल्ड अच्छा करता है, तो इसको एक काउंटर करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ईटीएफ मैं समझूंगा कि बेहतर है गोल्ड से जी। The Global Alliance for Banking on Values at the ongoing United Nations Climate Change Conference COP29 at Baku in Azerbaijan today announced that 25 of its member banks have endorsed the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative, marking the first collective endorsement of the initiative by financial institutions. A quick comment from you on what is on the annual... It's an important development. Please remember that the entire environment and the climate change debate is critically dependent on how you make available finances and funds. And right now, what you just now announced is that some sort of a light we have seen on that funding pattern. AKB मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। And before we close the headlines once again, domestic benchmark indices Nifty and Sensex declined for the 6th consecutive session. India's exports register a growth of over 7%. WPI inflation rises to 2.36% in October, and Union Minister
Piyush Goyal launches India International Trade Fair 2024 at New Delhi today. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.